Hello, you lovely people out there. My name is Darshana and welcome back to my channel. So if you are new to my channel, please consider subscribing if you like the video, and if you have already subscribed, thank you so much. Your support means a lot to me. So recently, I have been thinking of making a Buddha painting, and I finally decided to paint it this weekend, and I thought that I'll record it for you guys so that you can try it at your home too. It is an easy painting and I have used acrylic colors for painting it, and you can use any colors that you have at your home. So please keep watching this video till the end, and if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. So before much delay, let's get started with our video. First of all, we will start with drawing a rough sketch of Buddha. कलर्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है वाइट, एक्वा ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू, टर्कोइज डीप, लाइट ब्लू एंड पर्शियन ब्लू। तो सबसे पहले मैंने वाइट, एक्वा ग्रीन और लाइट ब्लू को मिक्स कर लिया है और एक लाइट वॉश दे रही हूँ फेस का जो लाइट पोर्शन रहेगा वहाँ पे। उसके बाद वाला जो ग्रेडेशन रहेगा उसके लिए मैं एक्वा ग्रीन यूज़ करूँगी, और उसके बाद वाला जो डार्कर ग्रेडेशन रहेगा उसके लिए मैं एक्वा ग्रीन और कोबाल्ट ब्लू यूज़ करूँगी। जो सबसे डार्केस्ट टोन रहेगा उसके लिए मैं टर्कोइज डीप यूज़ कर रही हूँ, और इसी से हम लोग जो है प्रॉपर शेडिंग क्रिएट करेंगे और पेंटिंग को एक डेप्थ मिलेगा इससे।
आईब्रोज़ को और आईज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन, ब्लैक और टर्कोइज डीप यूज़ किया। For creating an impression of curly hair, I am drawing spirals with the help of turquoise deep, and also there are gaps between these circles, so I'll fill them using turquoise deep. So if you have liked this video, please don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon so that आपको notifications आएंगे जब भी मैं एक नया video upload करूँगी. And in case you are recreating this video, don't forget to tag me on my Instagram ID. It is linked below.